Welcome back to Tide and Loam. I am your instructor Hassaan, and in this video we are going to study the most important organelle of the cell, which is called nucleus. So nucleus is cell's control center, यानी कि nucleus cell का control center है. cell में होने वाली जितनी भी activities हैं nucleus उनको control कर रहा है, nucleus उनको regulate कर रहा है. And the second thing about nucleus that you should know in introduction of nucleus is it was discovered by a Scottish botanist Robert Brown. So nucleus को discover किया रॉबर्ट ब्राउन ने. He was a Scottish botanist, a scientist who studies plants, and he discovered nucleus in Scotland. In earlier videos, we understood the cell with the help of analogy of a city, and here we are back again with the same picture. As you can see here, this is a picture of a city and this is a picture of a nucleus. And inside city there is a city court, city hall, the central building which issues instructions, which maintains law in the city. तो in the same way सेल के अंदर जो रेगुलेशन है, सेल के अंदर जो एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है. सो यू कैन से द न्यूक्लियस इज अ सिटी कोर्ट ऑफ द सेल. Moving forward to what is nucleus. So in this slide, I am gonna explain you nucleus with the help of different analogies to build up the concept of nucleus. What is basically nucleus? The first thing is nucleus is the court of the cell. यानी कि सेल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन एक्टिविटीज को जो रेगुलेट कर रहा है, जो सेल में लॉ एंड ऑर्डर है, दैट लॉ एंड ऑर्डर इन द सेल इज जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस. That is why nucleus is called court of the cell. Nucleus is data center of the cell. This is a data center, as you can see here. This is a data center, और nucleus is a data center because nucleus के पास सारा data है, सारी instructions है कि कौन सी activity किस तरह से करनी है. सेल में अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो कोई प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, तो न्यूक्लियस के पास डेटा है कि कौन सी प्रोटीन बनवानी है और कौन सी प्रोटीन नहीं बनवानी. दैट इज व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड डेटा सेंटर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. जिस तरह हमारी बॉडीज में ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इन द सेम वे न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है. न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल, एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस. न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल. न्यूक्लियस इज लाइब्रेरी ऑफ सेल. जिस तरह लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, इस तरह न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स हैं जो हमारी बॉडी की सारी स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करते हैं. दैट इज व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड लाइब्रेरी ऑफ द सेल. न्यूक्लियस इज सेंट्रल कंट्रोलर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस सेल का सेंट्रल कंट्रोलर है, द वन हु एक्चुअली कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल. Now you can definitely tell what is nucleus. Nucleus is the court of the cell, it is data center of the cell, it is brain of the cell, it is boss of the cell, it is library of the cell. In fact, it is central controller of the cell. Now, what is position of animal cell? Position of nucleus in the animal cell. Animal cell में nucleus center में present होता है, but in case of plant cell, it is present on the side due to सेंट्रल लार्ज वैक्यूल. प्लांट सेल में सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा साइड पर पुश हो जाता है. दैट्स व्हाई इन प्लांट सेल न्यूक्लियस इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है. और बैक्टीरिया में न्यूक्लियस टोटली एब्सेंट होता है. बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म. देयर इज नो न्यूक्लियस. The genetic material, the chromatin, is simply dispersed in the cytoplasm. Now, before I explain you the structure of nucleus, मैं आपको nucleus की कुछ images दिखाना चाहता हूँ that how actually nucleus looks like. So this is an electron micrograph of different cells. और इसमें ये जो these are pictures of different cells and these pictures are taken through electron microscope. जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नजर आती है. और इस पिक्चर में ये जो ब्लू कलर्ड, ये ब्लू स्फीयर्स जो लेबल की गए हैं एज ब्लू कलर्ड, दीज आर एक्चुअली न्यूक्लाई. और जब हम इसे और क्लोजअप करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, देन वी ऑब्जर्व दिस इमेज, and this is the structure of the nucleus.
सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस हमें ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है एंड दिस सेंट्रल डार्क स्पॉट इज न्यूक्लियोलस। और फिर ग्राफिकली डिजाइन पिक्चर, जब हम अब दिस इज हाउ वी ऑब्जर्व न्यूक्लियस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और दूसरे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए साइंटिस्ट ये ग्राफिकली डिजाइंड पिक्चर यूज करते हैं। दिस इज अ सिंप्लीफाइड ग्राफिकली डिजाइंड कंप्यूटर डिजाइंड पिक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस हमें एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है, लेकिन आफ्टर स्टडिंग न्यूक्लियस इन डिटेल we get this computer designed picture to help other people understand about nucleus. So let's start explaining the structure of nucleus, and the first structure that we are going to study is nuclear envelope. So सबसे पहला structure nucleus का nuclear envelope है, which is actually our double membrane. Nucleus is bounded by a double membrane which is known as nuclear envelope. As you can see here in the picture, this is a double membrane. It has two membranes. The one is called outer membrane and the other is called inner membrane. So जो membrane outside पर है that is called outer membrane, और जो membrane inner side पर है that is called inner membrane, and because there are two membranes that is why it is called a double membrane. Here you can see a close up के न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है एंड दैट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। और न्यूक्लियर इन्वेलप इज सेमी परमिएबल। जैसा कि हमने सेल मेम्ब्रेन के केस में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, विच मीन्स के वो कुछ मटेरियल्स को सेल में एंटर होना अलाउ करती है, लेकिन कुछ मटेरियल्स को सेल में एंटर होने नहीं देती, विच आर एक्चुअली हार्मफुल फॉर द सेल। In the same way, nuclear envelope is also semi-permeable. यानी कि ये न्यूक्लियस में सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स को एंटर होने देगा जो न्यूक्लियस के लिए जरूरी हैं, जो न्यूक्लियस के लिए अननेसेसरी हैं, जो न्यूक्लियस के लिए हार्मफुल हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप उन मटेरियल्स को सेल में एंटर होने नहीं देगा। और वो गेटवेज, वो पोर्स जिनके जरिए मटेरियल्स न्यूक्लियर इन्वेलप से इनसाइड न्यूक्लियस एंटर होते हैं, दोज पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स. So in this figure, as you can see here, these yellow spots are called nuclear pores, and these pores are passageway for transferring materials in and out of the nucleus. So nuclear envelope is a double membrane bounded structure, and it is semi-permeable, and it has pores, it has passageways which are used for transferring materials in and out of the nucleus, and these pores are called nuclear pores. Inside nucleus, the next structure is nucleoplasm. जिस तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, in the same way न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, and it is also a jelly-like material. जिस तरह साइटोप्लाज्म is a jelly-like material, in the same way nucleoplasm is also jelly-like material. और इस न्यूक्लियस की फिगर में, as you can see here, this yellow colored fluid is nucleoplasm. Now, what is its composition? The first component of its composition is water. जिस तरह साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में मेजर पोर्शन वाटर है, in the same way न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन में मेजर पोर्शन वाटर ही है. Then we have chromatin material, which is actually the genetic material of the nucleus. इस chromatin material को हम डिटेल में स्टडी करेंगे in the next video. And then we have nucleolus, which is this yellow circular spherical body is called nucleolus. Enzymes and ions. So न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन में वाटर है, एंजाइम्स है, आयंस है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है क्रोमाटिन मटेरियल और एक डेंस स्फेरिकल बॉडी विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. सो व्हाट इज न्यूक्लियोलस? लेट्स एक्सप्लेन व्हाट इज न्यूक्लियोलस. Nucleolus is a dense spherical body inside nucleus. So nucleus के अंदर ये जो circular spherical dense body है, that is called nucleolus. Because its density is high, that is why it is dense. It may be 1 or 2 in number. पॉसिबल है कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियोलस हो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि न्यूक्लियस में एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई हो. And it is dense because it is made up of RNA and proteins. Nucleolus is made up of RNA and it is made up of proteins. And it serves as ribosome factories. And this is the most important thing about nucleolus के सेल के साइटोप्लाज्म में जितनी भी राइबोसोम्स फ्लोट कर रही हैं, जो कि एक्चुअली प्रोटीन्स बनाती हैं, उन राइबोसोम्स को कौन बनाता है? उन राइबोसोम्स को बनाता है न्यूक्लियोलस.
So nucleolus is a factory which actually makes ribosomes. So there are actually three important points about nucleolus. It is a dense spherical body, it is made up of RNA and proteins, and it is a ribosome factory. यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में जितनी भी ribosomes फ्लोट कर रही हैं, that are all made by nucleolus. So nucleolus is a factory for synthesizing ribosomes. और हम अपना लेक्चर यहाँ डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूक्लियस का क्रोमेटिन मटेरियल को स्टडी करेंगे और इसके जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड नाउ लेट्स कंक्लूड आवर वीडियो. थैंक यू फॉर वाचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.